morning students, and welcome you all in this virtual class learning lectures. And you know very well that we have started some grammar part, and we have been we have actually done two lectures of assertive to exclamatory and exclamatory to assertive. This is the lecture especially for standard 9th and 10th. Okay. These are the sentence I have taken from your textbook only. So first question I have written here, that change into exclamatory sentences. That I have written the questions and we have to change them into exclamatory. Okay, so let's start. You know the rules. Is there any need to revise the rule? No. So directly we are writing the. Take second student, I am not getting my marker. Yes, I got it. So let's start the exercise. You know the rules. As I told you, there is no need to revise the rule because in my second lecture also I have made the revision of the rules. So directly come to the exercise. So here the questions are from your textbook. So first question is, she was delighted. So here delighted is the adverb. There is no need to tell me that because it is now easy for you. So the answer is like this. How delighted she was. She was. Exclamation. Okay. Next one. It all went down with relish. So you can take like this. Exclamation mark. It all went down with relish. Next, she wept and fretted. So here, alas, because it shows the sorrow or grief to you, so you use alas, exclamation mark. She wept and fretted. Full stop. Next question is, my wife cried bitterly. So bitterly is again adverb. So how bitterly my wife cried. Exclamation. Are you getting, guys? Because this is very easy. You have to try to do yourself. Okay. Next one. The keepers felt depressed. Again it is adverb. So how depressed? The keepers felt. Exclamation. Next one. It is interesting. So the answer is, tell me what is the answer. How interesting it is. So the answer is how interesting it is. तुम लोग ऐसा मत सोचो कि मैम आपने सारे हाउ के लिए हैं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में हाउ के मिले तो हाउ के लिए, वर्ड्स के अगर मिलते हैं तो हम लोग वर्ड्स के भी लेते हैं. ओके. सो नेक्स्ट वन, he went wild with joy. So here he went wild with joy. Okay, joy is abstract noun, but you see wild. Okay, so you take how here. How wild he went with joy. Exclamation. Don't forget to put exclamation mark. Next one. Marbles were his favorite toys. So here marbles. So how marbles were his favorite toys. Exclamation. Very easy, student. Next one. I put the miserable Midge back into the box. This is I think the questions I have taken from your chapter 8 and 9, I think. So I put the miserable Midge back into the box.
it shows PT. Okay, so you take alas. Alas, I put the miserable meat back into the box. Full stop here. Last question. He disappeared at high speed down the aircraft. So you see down is the adverb. So you can write this way. How down the aircraft he disappeared. Here A is left. How he disappeared at high speed. Exclamation. So 10 sentences, because you know there we have time limitations now because of these virtual classes and lectures. So I have taken 10 sentences of exclamatory. Okay, let's have a revision of this. Then we will change the exclamatory to assertive. Okay, so here first question is she was delighted. So your answer is how delighted she was! Exclamation. It all went down with relish. So here it all went down with relish. Full stop. She wept and fretted. Your answer is alas, she wept and fretted. My wife cried bitterly. How bitterly my wife cried! Exclamatory mark. The keepers felt depressed. How depressed the keepers felt! Exclamation mark. It is interesting. How interesting it is! Exclamation. Next one. He went wild with joy. How wild! He went with joy. Marbles were his favorite toys. How marbles were his favorite toys. I put the miserable Mitch back into the box. Answer is alas, I put the miserable Mitch back into the box. He disappeared at high speed down the aircraft. How down the aircraft? Because I told you see the down, don't the aircraft. How down the aircraft he disappeared at high speed. This is the completion of change assertive to exclamatory. Now students see. Many students have doubt in that, ma'am, how you come to that, know that we have to take which sentence first and which one is later. It needs practice. उसके लिए तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तुम्हारे टेक्स्ट बुक कैंप में दिया हुआ है सब कुछ. Each every chapter, after every chapter, there is an exercise of all the transformation of sentences. Either it is exclamatory, assertive, question type, change the voice, simple complex compound. This year simple complex compound is not there to you, but उसकी भी एक्सरसाइज तुमको दी हुई है. सो यहाँ पे तुम लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये तुम्हारे लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि जिस तरह से तुम लोगों ने देखा अफर्मेटिव टू नेगेटिव था, फिर इंट्रोगेटिव टू असर्टिव था, फिर ये है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, ये सब कुछ इजी है. उसके लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए. सो गाइस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ले लो या मेरा वीडियो पॉज करो और ये सब कुछ जो तुमने पहले एक्सरसाइज 2 वीडियोस के जो भी कंटेंट तुमने ग्रामर की बुक में लिखा है वो सारा कंटेंट के आगे ये कंटिन्यू करना है तुम लोगों को. ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अभी मैं इसको रब करूंगी. हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी देखेंगे. Give the next
next question heading like this. Question: change into assertive. इतना ही हेडिंग दो क्योंकि ऊपर तुमने हेडिंग दिया है एक्सक्लेमेटरी टू एसरेटिव, तो यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. ओके, हम लोगों को एक्सक्लेमेटरी से अभी किस में चेंज करना है, एसरेटिव में चेंज करना है. सो हम लोग पहले क्या करेंगे, वी विल राइट द क्वेश्चंस फर्स्ट. ओके, द क्वेश्चन इज हाउ indescribable the feeling is. First question is how indescribable the feeling is. Exclamation. Next, what a spiritual moment it was. What a spiritual moment it was. Exclamation. Third, how proud as an Indian I felt. How proud as an Indian I felt. Next questions are yes. How curious about things she was. Fourth one. How curious about things she was. Fifth one. Fifth question. How a tiny hand was. How a tiny hand was commandingly raised. Commandingly raised. Sixth question. How soft and luxurious the seat was. How soft and luxurious the seats were. Exclamation. Next, 7. How Valli devoured everything. How Valli devoured everything. With her eyes. With her eyes. Next question. Next question is like this. Alas, it makes my life misery. Alas,
It makes my life a misery. Now see students, एक एग्जाम्पल हमने लिखा था ओ दैट वाला, कुछ क्वेश्चन था आई वुड बी अ प्रेसिडेंट समथिंग। ओ दैट के बाद तुम लोग वहां कॉमा ले लो, शायद मैंने दिया नहीं है। ओके, ये याद रखना, वो प्रीवियस वीडियो का है पर मुझे अभी तुरंत स्टक हुआ, सो यू कैन गिव द कॉमा देयर। ओके गाइस, अभी ये क्वेश्चंस हमने लिखे, हम लोगों को इसको अभी क्या करना है, वी हैव टू चेंज इट इनटू एसरेटिव। तो एसरेटिव में हम लोगों को ये जो क्वेश्चंस हमने लिखे हैं उसको हमें चेंज करना है। जैसे तुमको पहला क्वेश्चन मैंने लिखवाया था यहाँ पे, हाउ इनडिस्क्राइबेबल द फीलिंग इज। सो लेट्स राइट द आंसर, हाउ इनडिस्क्राइबेबल द फीलिंग इज। हाउ को निकाल दो तो हम लोग आंसर लिखेंगे द फीलिंग इज वेरी, सो आई एडेड वेरी हियर। याद है तुमको मैंने बोला था वेरी, एक्सट्रीमली, ट्रूली, ऐसे वर्ड्स तुम लोग ले सकते हो। द फीलिंग इज वेरी इनडिस्क्राइबेबल, कंप्लीट। उसके बाद हमने फुल स्टॉप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अ स्पिरिचुअल मूवमेंट इट वाज। सो आंसर आएगा इट वाज ए, ट्रूली ले लो, एक्सट्रीमली ले लो, चलेगा। इट वाज अ ट्रूली स्पिरिचुअल मूवमेंट, इट वाज अ ट्रूली स्पिरिचुअल मूवमेंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ प्राउड एज एन इंडियन आई फेल्ट। सो आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, सो आंसर आएगा आई फेल्ट प्राउड as an Indian, full stop. Are you seeing the changes what I am making here guys? Okay, वो भी देखना है। Next one, how curious about things she was. She was very curious about the things, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे she was very curious about things, she was very curious about things, full stop। next question तुम लोगों को दिया है, how a tiny hand was commandingly raised। तो ये सिंपल है, तुम लोग लिखोगे a tiny hand was commandingly raised, full stop। next one, how soft and luxurious the seats were। तो हम लोग लिखेंगे the seats were soft and luxurious, completed। next one, how Valli devoured everything with her eyes। तो आंसर आएगा Valli devoured everything with her eyes। next, alas it makes my life misery। तो तुम लोग सिंपली लिखोगे it makes my life, sorry not wife, life a misery। so these are the examples, 8 are enough। total examples are also lot of example plus exercise questions we have done। so see, with this you come to know that how you can change assertive to exclamatory और exclamatory to assertive। एक बार रिवाइज करते देखो। पहला क्वेश्चन तुमको था हाउ इनडिस्क्राइबेबल द फीलिंग इज। सो मैंने यहाँ पे द फीलिंग इज वेरी इनडिस्क्राइबेबल आई एडेड वेरी। व्हाट अ स्पिरिचुअल मूवमेंट इट वाज a truly spiritual movement। Yeah,
इट वॉज एन एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल मूवमेंट। ऐसा भी तुम लोग लिखोगे तो भी चलेगा, बट एक्सट्रीमली से अच्छा ट्रूली लग रहा है। नेक्स्ट है हाउ प्राउड एज एन इंडियन आई फेल्ट। सो इसमें आंसर आएगा आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। नेक्स्ट वन, हाउ क्यूरियस अबाउट द थिंग्स शी वॉज। सो इसका आंसर आएगा शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। हाउ अ टाइनी हैंड वॉज कमांडिंगली रेज्ड। आंसर आएगा अ टाइनी हैंड वॉज कमांडिंगली रेज्ड, सिंपल आंसर। हाउ सॉफ्ट एंड लग्जरियस द सीट्स वर। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। हाउ Valli devoured everything with her eyes. Answer is Valli devoured everything with her eyes. Last question is, alas, it makes my life a misery. Your answer is it makes my life misery. So this is very easy. तुमको समझ में आया होगा हम लोगों ने किस तरह से ट्रांसलेशन किया है। ओके गाइस, सो इसके साथ तुमको समझ में आया कि हम लोगों ने किस तरह से इसको चेंज किया। सो तुम्हारा यहाँ पे असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी का जो टॉपिक था वो कंप्लीटली ओवर, पूरी तरह से तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, बट तुम लोगों को ये अच्छी तरह से अपने नोटबुक